Hello everyone, my name is Manish Kumar and you are watching Software Circle. So here in this series, in last video, we saw that how to add a database project. We had just added. With this, how to publish the whole database and having those SQL files as a table and uh, pre-deployment, post-deployment script, and also later on in the stage while developing this e-commerce website, maybe we need to create some stored procedures, functions, trigger, so and so forth. We will be able to uh, create create gradually those those artifacts here only, and everything we will do related to database through database project only. We'll see that. Okay. As usual, I'm just clicking on F5 just to show that on the website we have not changed anything. It is just as it was before. So the site open, and in this in today's video, we will talk about ORM model. ORM model. So the site is the same. So e-commerce. Just closing it. Okay. So since we have created a database, we have a website ready. Ready in the sense we have a website now. Now we need a something which connects both of them. Means we need a data access layer. We'll just create a data access layer. So though we can have this layer embedded in the UI itself, but we'll create a different project. Okay. So new project will take it as a class library. Class library. We'll call it page data. With data access. Okay. Next, create. Now, since we are creating this this data access layer, so here okay, one more thing that we would do. So the sequence has just changed. So what we do, so data access layer will, I mean, the way project will start will name it the same way. So let's mark it one. Will be second. Will be three. Okay. So it remains in this sequence now. 1, 2, 3. First starts with database, then data access, then at the end web application. Okay. So here in data access, so what we need, we will use the ORM tool to connect the database with our web application. So ORM tool is nothing but it's the object relational mapping. As the word says, object relational mapping, it means that it creates the object out of that table which is there in our database, and whatever we query, we query on the object only. Means एक बार हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो जैसे हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मल सी शार्प में, एंड अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ यूजर्स है, तो हम जब भी क्वेरी करते हैं लिंक क्वेरी विल डू इट ऑन ऑब्जेक्ट ओनली. सेम वे ORM tool handles everything everything's behind. We'll just consider this is the list of user, and we will query on it like get me the user which has an ID called 2. So ये query internally ORM tool handle करेगा. हमें बस link query लिखनी है, and easily we will be able to use it in C#. So that is the benefit of ORM tool. We need not to write certain queries in database and anywhere else. Only the thing is what to call if we create a stored procedure. So stored procedure also handled through ORM tool. That is stored procedure will write in the database, and whatever stored procedure returns, we will map those stored procedure data in
ORM tool itself. So from there also, instead of, so see, I have a user profile. Maybe I'll get the data through stored procedure, which joins two tables, user and user profile. So अभी यहाँ पे जो भी हमें मॉडल आएगा, हमारे ना यूजर में मैप होगा और ना यूजर प्रोफाइल में मैप होगा, तो हम उसमें उसको एक कॉम्प्लेक्स टाइप मॉडल बोलते हैं, जिसमें जिसमें हम एक सर्टेन मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें वो डायरेक्ट मैप होता है. सो दैट वी विल सी लेटर ऑन. आई एम जस्ट गिविंग ए हेड्स अप दैट हाउ वी विल यूज इट. एंड हमें कहीं भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है. सब कुछ हम लिंक में C# में इस ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करेंगे. एंड इंटरनली ORM टूल विल हैंडल एनीथिंग एवरीथिंग. सो ये ORM टूल हमें हम ORM के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं, जो डॉटनेट कोर के साथ कॉम्पैटिबल है, वो यूज करेंगे. तो जस्ट ऐड मैनेज नूगेट पैकेजेस. तो ये और एक और ये ORM टूल ORM टूल्स के साथ हम नॉट ओनली SQL सर्वर, वी कैन कनेक्ट मोस्ट ऑफ द important database, whether it is the Oracle, whether it is the MySQL, maybe a MongoDB also. So there are PostgreSQL also. So there are number of database also that supports that is supported by entity framework. So we'll just select Microsoft Entity Framework dot framework core dot SQL server. Microsoft Entity Framework core dot SQL server. Since हमें SQL server है, हमारे डेटाबेसेस हम SQL server यूज करेंगे. SQLite भी सपोर्टेड है, मल्टीपल अदर डेटाबेस सपोर्टेड है. ओके, नाउ here we would choose fifth version, because sixth version is only supported with .NET 6. Currently we have a .NET 5, so we will pick the fifth version. So let's install it. Here, since we have already created database, which you asked me, I personally like a database first approach. So there are two approaches. First is database approach, and second is a code first approach. In database approach, we have a database, or rather say that we create a database first, and then we map everything in the application through this ORM tool. So ORM tool does everything for us and creates a model out of that database tables. Okay. Now अभी इसके बाद .SQL server के बाद tools, Microsoft Entity Framework core dot tools. यहाँ भी हम फिफ्थ वर्जन लेंगे. Fifth version. Okay. Let's start. ये दो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है बस. एवरीथिंग गॉट इंस्टॉल्ड. अभी इसके लिए जो भी डिपेंडेंसी थी, इसने इंटरनली सब कुछ इंस्टॉल किया. ओके, अभी ये क्लास की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, जस्ट डिलीट इट. नाउ अभी हम पैकेज मैनेजर कंसोल में जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जस्ट एक कमांड रन करना है. दैट कमांड विल हेल्प अस टू क्रिएट द होल DB कॉन्टेक्स्ट. द होल कॉन्टेक्स्ट इट विल क्रिएट फॉर अस. ओके, तो इसके लिए हम क्या कैपहोल्ड हाइफन, हमें DB का पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए. सो कैपहोल्ड, सो ये पैकेज मैनेजर कंसोल के थ्रू में रन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पैरामीटर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देना है. तो कनेक्शन स्ट्रिंग जस्ट कॉपी, तो आप ऐसे भी कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं. सो नो इशू एट ऑल. देन से प्रोवाइडर Microsoft dot entity framework core dot
SQL server. Then what could be the output folder? Output. So this is not mandatory, but I will create it. Output directory. What else? Data access project. तो अभी ये क्या करना चाहिए इसको हमारे डेटा एक्सेस प्रोजेक्ट में एक मॉडल नाम का फोल्डर बनना चाहिए और हमारे डेटाबेस का ये यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा डेटाबेस का नाम है ऑफिस फ्रॉम हियर। हमारे पास एक क्लास में पब्लिश प्रोफाइल था ये। हमारा यहाँ डेटाबेस नाम है। पैकेट मैनेजर कंसोल डेटाबेस ये डेटा एक्सेस प्रोजेक्ट में you will see it's magic. Build started, it succeeded. Okay, your startup project this does not reference to entity framework core design. This package is required for the entity framework core tools to work. Ensure the startup project is correct. Install the package and try again. Try it again. यहाँ हमें तो रेफरेंस को यहाँ इसका प्रॉब्लम है इधर येलो साइन ये सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसके साथ इसको रेफरेंस भी करके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस डेटा एक्सेस लेयर या मैनेज packages or maybe we'll just build it, it will restore it. Okay, no, it did not. Of the data access, it cannot be referred to a project. .NET Core version 3.1. हमारे पास ये .NET Core version 3.1 okay. Just update this. कि वो हमने .NET 5 पे क्रिएट किया है. Also need the same compatible one. Okay, so once this all reference thing is settled, then we will be able to see our all the models corresponding to the table here. तो यहाँ हमारे पास .NET 5 करते हैं, save it, save on the file, happening, build. Okay, all resolved. In the sign. Package manager console. Yeah. With data access. Okay. Does not reference. Still it is dependency packages. Is 3.1.5. Okay. Say what it is looking for is looking this. State all 3.1.5. I need 5.
Okay, this is updating now. 5.0 नहीं है उसमें. Okay, no problem. That I will also. Again, solve the package, try again. Framework code tools. Microsoft Entity Framework code. Ah, is looking for this one. For design. So startup project. Engine. Yep. See. Some warning. The total, the protect sensitive information of connection string. You should move on to the source code. Okay, connection string के लिए so that map run property, but it has the default constant. That's fine. So if you see here, see in the we got a models folder, software database context, user, got the user. तो जो भी हमने टेबल में कॉलम क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ आ चुके हैं. अगर वो नलेबल है तो यहाँ नलेबल है, हाँ नॉट नल है तो नॉट नल है. ठीक है. सेम वे यूजर प्रोफाइल भी हमें यहाँ आया है. मॉडल इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है. ठीक है. यहाँ आपकी वार्निंग है क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो इसमें नहीं रहना चाहिए और कहीं कॉन्फ़िगर रहना चाहिए. अरे भाई manifest cannot directly contain members such as fields as methods. Me, I can software data access. This just add the class. Ah, okay. Delete कर देंगे.
तो ये तो हमारा भी क्रिएट डीबी कॉन्टेक्स्ट नाउ। अभी इसे हमें यहाँ यूज करते आना चाहिए। तो स्टार्टअप में जाते हैं, सिंस हमें कनेक्शन स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे यहाँ। ओ सॉरी, नॉट हियर, नॉट ए बंडल कॉन्फ़िग, हमारे पास है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग डालेंगे। यहाँ पे हम एक डालते हैं ब्रिज, ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग। टीवी कनेक्शन, अभी यहाँ से हम टीवी कनेक्शन कॉपी करके, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िग। यहाँ जाते स्टार्टअप में हम जाते हैं। स्टार्टअप में हमें चाहिए कॉन्फ़िगर सर्विसेज, ओके। यहाँ पर सिंपल सर्विसेज, यहाँ पे हम सिंस डीबी कॉन्टेक्स्ट हमें सारे कंट्रोल में ऑलमोस्ट चाहिए रहेगा, तो हम यहाँ से ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन में डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, पेज डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शंस क्रिएट करने, ऑप्शंस डॉट यूज एस। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स का चाहिए, तो यहाँ पे इस सर्वर में configuration dot get value, ठीक, config dot the connection string, the connection string. Okay. Now you just check what it says. Over. Okay, what it says? Use this method when using dependency injection in your applications, such as with ASP.NET Core. For example, that don't use dependency injection. Consider creating DB context instances directly with its constructor. The DB context dot on configuring method can then be overridden to configure a connection string and other options. तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे ऑन कॉन्फ़िगरिंग है, इसको ओवरराइड करता है। सो वी सिंपली डॉट नीड इट, कि हमने उधर ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब हमें
इसे हमें किसी न किसी कंट्रोलर में यूज करना है, तो करेंगे। अभी तो किसी भी कंट्रोलर में यूज इट इन होम कंट्रोलर। तो यहाँ यूज करने के लिए सिंपली एक प्राइवेट रीड ओनली, यहाँ पे हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ये होम कंट्रोलर हमारा होम कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे हमारे पास ये आना चाहिए। अभी हम इंडेक्स बस इसको लगाते हैं एंड विल सी ट्राई टू बिल्ड। बिल्ड सक्सेसफुली, साइट यहाँ ओपन तो है, बट उसके पहले ब्रेक पॉइंट हमारा जाना चाहिए। उसके पहले वो ब्रेक हुआ, वैल्यू कैन नॉट बी नल, सो हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। लेट्स सी। this this config यहाँ डालो, हमने डीबी कनेक्शन लिया, डीबी कनेक्शन काम किया, ठीक है, seems fine। equation dot get value, next options, option dot use SQL server, configuration dot take it down, patient। There is some issue with this config, तो हमें यहाँ इन ही है एक that is a mistake, lunch चाहिए penetrates, okay, right। ओके, फ्रंट पे एटलीस्ट तो हमारे इंडेक्स पे आ गया है। ये हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बस कुछ है क्या इसमें। कॉन्टेक्स्ट में यूजर एंड यूजर प्रोफाइल हमारे पास दो टेबल था। यूजर्स पे हमने लास्ट वीडियो में एक एंट्री डाली थी सुपर एडमिन के लिए, तो वो देखते हैं वो वैल्यू आई है क्या। ये सी लुक एट दिस, हमारा वैल्यू यहाँ रीड हुआ एंड जस्ट चेक इट आउट, once we click on this result view then only query was made to the database and it fetched the data। नहीं तो वैसे डेटा यहाँ पहले से रहता है, लेजी लोडिंग पे एंटिटी फ्रेमवर्क वर्क करता है, इन्हीं ओवररन टूल, दिस इज हाउ इट इज।
ओके, सो अभी हम डेटा हमारे पास आ चुका है, हम कंट्रोलर में उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी एक और काम हमें करते क्या है, अभी हमें जितने भी हमें कंट्रोलर में यूज करना है, जितने भी कंट्रोलर में यूज करेंगे सब में हमें ये कॉन्टेक्स्ट की तरह हमें यूज करना पड़ेगा। इंस्टेड व्हाट आई डू, जस्ट क्रिएट अ बेस कंट्रोलर। कंट्रोलर वाले बेस कंट्रोलर, और हमें यहाँ की जरूरत है। और यहाँ से होम कंट्रोलर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लॉगर विल कम लेटर ऑन, एक्सट्रैक्ट करते हैं। as everyone may know why we use protected, so that ये inherited class में ही accessible रहेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे बस को टेक्स्ट टेक्स्ट है, और यहाँ से भी हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे। हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। बेस को हमें यहाँ भेजना पड़ेगा पैरामीटर बेस कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ इनहेरिट करना है बेस instead of control. Okay, let's check it out. Right. Okay, ब्रेक पॉइंट यहाँ आया कि हमारे पास अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट है, राइट। कॉन्टेक्स्ट हमने बेस में डिफाइन किया है, क्योंकि प्रोटेक्टेड ये अभी हमारे पास इसमें भी अवेलेबल है। रिजल्ट पी able to access it. So this is how it is. तो इसमें हमने ORM टूल इम्प्लीमेंट किया। अभी हमारे पास यहाँ पे we are able to access डेटाबेस डेटा। तो बेसिकली हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ बिटवीन डेटाबेस एंड हमारा यूआई के बीच में, हमारे वेब एप्लीकेशन के बीच में। नेक्स्ट वीडियो we will work on our register module, where we would how we can register a data, register a user from our application, and that should get saved in database. Okay, that's it. And obviously ये कोड अगेन हमारा सेम GitHub में पुश कर दूंगा, and you will find the link in description. Till then, thank you.